के लिए। The Bharatiya Janata Party has distanced itself from the statement of its MP Nishikant Dubey. Nishikant Dubey had slammed the Supreme Court, saying that if the court was to make laws, then Parliament should be shut down. Dubey had also stated that the Chief Justice of India was to blame for civil wars in India. BJP President JP Nadda has spoken out against these remarks, saying the party has nothing to do with the statements, which are personal views and not supported by the BJP. Nadda reaffirmed the BJP's respect for the judiciary, calling it an integral part of democracy and a strong pillar that protects the constitution. He also stated that Dubey and other MPs have been instructed not to make such statements. We're getting to know a letter has in fact now been written to Attorney General of India seeking consent to initiate contempt of court proceedings against MP Nishikant Dubey. The letter was written by Advocate Anas Tanveer under Sections 15B of the Contempt of Courts Act. Meanwhile, the Congress has slammed the BJP over the situation, with Congress's Jairam Ramesh stating the BJP's distance itself carries little meaning. Ramesh in fact called the two BJP MPs who made these remarks repeat offenders when it comes to hate speech. Ramesh called the BJP's actions nothing but damage control. Well, several more political reactions in fact are coming in to this big story. सांसद ऐसे कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी ने कह रहे हैं कि सिविल वॉर्स यहाँ जो हो रहा है इस देश में संजीव खन्ना के वजह से है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि न्यायपालिका इज इंसाइटिंग रिलीजियस वॉर्स यहाँ। तो ये आप न्यायपालिका के ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसका मतलब आप संविधान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। मैं आज संजीव खन्ना जी से पूछना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि क्या कार्रवाई आप करोगे, वेदर दे विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके ऊपर क्या कार्रवाई आप करेंगे। और यही मेरा जो नेता राहुल गांधी हर वक्त हर समय बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है इसके वजह से, और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं करोगे तो कल बहुत सारे लोग न्यायपालिका के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर आक्रमण करेंगे। ये बहुत दुखद है, और जिस तरह का बयान आया है, वो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुखद हैं। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि किसी कानून को पहली बार चैलेंज, इससे पहले भी जो सरकारों ने कानून बनाए और कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह संविधान का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, ये पहली बार नहीं है। दूसरी बात यह है, जिस तरह की गृह युद्ध की बात करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का अगर काम करोगे तो ये तो इससे ज़्यादा चिंता कोई हो नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी का पल्ला झाड़ लेना, ये तो उनकी पुरानी आदत है। पहले 400 पार कर दो तो संविधान बदल देंगे, फिर बाबा साहब का कभी मान नहीं किया, बाबा साहब का हमेशा अपमान किया, अब बाबा साहब के कसीदे पढ़ने शुरू। तो ये तो उनका हम तो पहले दिन से संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान को अंगीकृत करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो बहुत दिनों तक माना भी नहीं था। तो हम लोग तो बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान चाहते हैं, हम लोग बाबा साहब के सपनों को सच करना चाहते हैं। Sad state of affairs. Again, the BJP is trying to influence, change the constitution of India, and the signals are coming from people like Nishikant Dubey, who is very close to Mr. Amit Shah, and he has the words he used against the Honorable Chief Justice of India is unacceptable, and we hope that the Supreme Court on Monday takes sumo moto and take this as a contempt of court. To insult the Chief Justice of India is unacceptable to us, and we all know that Nishikant Dubey is a habitual offender. He speaks derogatory manner about all the leaders of the country. Therefore, he has the support of Mr. Amit Shah. Therefore, only he is doing this kind of thing and in getting away. And Mr. Modi's silence on Nishikant Dubeyji's statement on the Honorable Chief Justice of India shows that why Mr. Modi is silent, and Mr. Modi as Prime Minister must react on the attack on the Chief Justice of India. अगर लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी से देश के फैसले हो सकते तो अयोध्या का फैसला कई साल पहले हो गया होता। अयोध्या का फैसला भी तभी हुआ और तभी सबने माना क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुनाया और सब लोगों ने माना। जिसे नहीं पसंद था उन्होंने भी माना, मुसलमानों तक ने माना। तो निशिकांत दुबे जो बात कर रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं
कि देश का मुसलमान तो सुप्रीम कोर्ट की बात तब भी मानने के लिए तैयार है जब अयोध्या का फैसला उसके खिलाफ आ गया, मगर निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहां पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इन लोगों की आस्था न संविधान में है न सुप्रीम कोर्ट में है। इन्होंने देश की तमाम संस्थाएं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सारी संस्थाएं ध्वस्त कर दी। सब में इन्होंने अपने यसमैन बिठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं हो पाया है, इसलिए You see the statement of one BJP MP, Nishikant Dubey, alleging that the Supreme Court is inciting religious conflict in this country is a most unfortunate statement. It is a very undemocratic statement, and this statement is against the spirit of the Constitution. You know, the Supreme Court, the Parliament, all are creation of the Constitution, and all such institutions work under the provision of the Constitution. So this type of allegation against the Honorable Supreme Court is against the spirit of the Constitution. This is a very irresponsible statement, and I'm surprised, and the whole country is surprised, how an elected member of Parliament belonging to the Bharatiya Janata Party could issue such a statement or bring such allegation against the Honorable Supreme Court. Supreme Court is the custodian of the Constitution. Supreme Court interprets the provision of the Constitution, and Supreme Court has the right and authority of interpreting the law of the land. And whatever decision Supreme Court comes into, or whatever verdict Supreme Court gives, it is the constitutional responsibility and duty of all institutions and all citizens of the country to follow the order of the Supreme Court. So this type of allegation against the Supreme Court, I will again say,